अब आप लोग को स्टार्ट करना है, जैसे भी आप स्टार्ट करना चाहें। ऑडिटर पहले बताना चाहे, इंट्रोड्यूस करना चाहे, या ऑडिटी, जैसे भी। यस। Good morning. Good morning. And you can see here there is a MCL DCB team. And my name is Naveen Tiwari, planted MCL DCB. I will support you and one by one all will introduce you as a team. Myself Anish Kumar, I am looking here operation. Myself Tiagi, I am looking production. Myself Mohammed, looking for Myself Anish Kumar, looking Thanks for the introduction. And we are also auditor on inside. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस, कंटिन्यू। ऑडिटर इतना डरे हुए हैं, जैसे लग रहा है इंटरव्यू पे आए हुए हैं। सो दिस इज नॉट इंटरव्यू, ओके? हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम लोग रिटर्न आप लोग हावी, मतलब वो लोग हावी हो गए, प्लीज। उल्टा कर लेते हैं। हाँ, नहीं नहीं, आप करने तो ऐसे सीखेंगे। यस। सो थोड़ा सा my team is saying like this is for maintenance department, quality department, engineering department, myself, and the engineering department. So our total 4 people we have to do your assessment is for 2 days program. So complete we will consider in 2 days. So one by one we will read like myself conduct the machine shop program, and this is from diagnostic side, and Nidhi is coordinate to all this department. And this is from maintenance side. So it's a 2 days program. So first of all, thank you for your team and you also. So we will start the IATF audit. It's a 2 days program. Okay. Thank you so much. Also, we will go with quality side. Quality side. So can you tell me about your last year customer complaint? Sunny will explain you the whole procedure of quality side. Okay. Last time we have received 2 customer problem. And before this, I have one question regarding the policies. And what is your long-term strategy in your company? Just I am asking you. एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आप ये कह सकते हैं कि हमारी पॉलिसीज में लिखा हुआ है कि वी वांट टू ग्रो अवर बिजनेस सब्सिक्वेंटली इन आवर पॉलिसी विद ऑल 4 सप्लायर पिलर्स के साथ हमें इंटरनल क्वालिटी प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करना है। और सबसे पहला हमारा जो मेन एम रहता है वो रहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि वॉट एवर वी आर सेलिंग अवर कस्टमर इज सेटिस्फाई और नॉट, उसके हिसाब से हमारी पूरी टीम यहाँ काम करती है। अगर हमारा कस्टमर हैप्पी नहीं है तो हम सबका यहाँ पे काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली वी आवर कंपनी आवर ऑर्गेनाइजेशन इज कस्टमर फोकस्ड। जैसा कि अनिल जी ने आपको बताया कि लास्ट ईयर हमारी केवल ओनली 2 कंप्लेंट्स रिसीव हुई, जिसमें से एक इंटरनल ग्रुप थी, एक एक्सटर्नल थी। उसमें भी किसी भी तरीके का कोई डेबिट हमें रिसीव नहीं हुआ, बिकॉज हमने कस्टमर से अप्रूवल लेके उस पार्ट को उन्हीं के एंड पे जाके रिवर्क किया और कस्टमर कंप्लेन को वहीं रिजॉल्व किया। और इन हाउस कंप्लेन में हमने आरजीपी देके उन पार्ट को रिटर्न लिया और हमने उनको नया मटेरियल प्रोवाइड करवाया। Am I right? So basically Yes.
Good morning, team. We are here, VNS Consultants team here for audit. And my name is Naveen Tiwari, and I am coordinating this Parmida plant as our overall operations. And now I want to introduce Mr. Anish. He is looking after the wholesale operations. And now over up to you, Mr. Anish. Currently, I am myself Anish and I am here. In operation, we are monitoring quality also as well as quality and production, both the sides. Myself Gorosagi, and here I am looking for production department for old camp. My name is Mohammed. I'm looking for a special. My name is Akhilesh. I'm looking production for also. Thank you for the introduction. And as you know, today is your third party audit, and we are coming here to audit your organization. We are from Topshod organization, and my name is Nidhi Tiwari, and I have 7-year experience in automotive industry. And yes, second, I'm requesting you to introduce yourself. Myself Sean, I have 7 years experience in automotive industry, and I will be a auditor for IAT 160. यस मेरा नाम प्रभु शर्मा है और मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें ऑडिट की तरफ से मैं बात करूँ तो मैं पिछले 7 साल से ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है। और IAT के ग्रुप से जुड़ा हूँ मैं। मेरे पास ऑडिटर का सर्टिफिकेट है और बाकी सारे क्वालिफिकेशन वगैरह सारी हैं। बाकी देखते हैं आगे आपका ऑडिट के लिए। Good evening, guys. My name is Mohit Kumar. I am having 10-year experience in auditing field, and right now recently I work in a die casting division, and total experience die casting division is 7 years. So totally last 7 years I am working in auditor field. So over to you. Okay, thank you, my team. So now we are going to know about your department objectives, about your top management goal, policy, what you have established for your organization, and what is your management strategy. So, yeah. So I think we have to bifurcate the timing for different groups. Like we will do parallelly over that. Means top management planning, we can discuss with me in operations like we establish this type of planning to do. How many automotive customer you have? Right now we have 42 customers, major customers. Okay, all are tier 2, tier 1 suppliers. Some of them are tier 1 and most of them are tier 2. Okay, you are tier 1 supplier. For how many customers? No. Actually 42 customers are there and we are tier 2 suppliers for 21 and for remaining 20 we are tier 1 suppliers. Okay. So, can you